It is not a joke. एक माँ 9 महीने बच्चे को रखती है अपने पेट में. It is not easy. It is never easy. And you know, there's a huge thing about the pediatrician in our country also, Anurita. They are not aware of autism. आपका एक लड़का है जो बहुत अग्रेसिव है, जो बात बात पे मार कुटाने पे उतर आता है. And I broke down. I started crying. I was like, I'm not able to take it anymore. ये क्या हो क्या रहा है यार? When I saw him withdrawing, when I saw him not talking and all, I started blaming myself. I said, you know what, Kriti, this is a big mistake that you've done. You should not have become mother so soon. I've even taken his hand and दरवाजा खोल के मैंने उसे धक्का मार के बाहर भेजा है कि भाई तू निकल यहाँ से, मेरे से नहीं हो पाएगा. मैंने भी अपने बच्चे पे हाथ उठाया है और एक बार नहीं बहुत बार उठाया है. There were days जब हम लोग कंघी तक नहीं करते थे. हम लोग एक फटा टी शर्ट और फटा पजामा पहन के आते थे भाग भाग के. अच्छा ये क्या होता है, अब क्या होगा, ये ऐसे ही रहेगा क्या, अब ये ठीक नहीं होगा क्या, ये स्कूल जाता है क्या, ये स्कूल क्यों नहीं जाता. And I broke down. I started crying. I was not able to take it anymore. Somebody called my son पागल. And I got very angry. मैं how dare you? बोल तूने मेरे बेटे को पागल कैसे बोल दिया. The moment दुनिया को पता चलता है ना कि आप स्पेशल नीड माँ हो, पूछो oh you are a super human, you are a super woman. अरे बंद करो बोलना, उसका दिमाग मत खाओ. It'll never end. It'll never end. Motherhood is not funny. There are days when it doesn't bring any happiness. हमारी ज़िंदगी में we just have one goal कि हम इस बच्चे की मदद कैसे कर सकते हैं. फिर मैं खुद को बोलती थी, you know what, Kriti, this too shall pass. Why don't you do something about it? बस जी हो गया. रातों रात the special mom was born and the work started. Hi, I'm Anurita Jha, your host for the podcast. Our guest today is Kriti Mitra Bhatia, a Shakespearean soul turned social entrepreneur, found the special mom to help and empower parents and caregivers of special need people. This mother of two embarked on this journey when she realized that as a mother, she is the loneliest and in dire help of need herself than her son with autism. This fueled her journey into a wonderful community of close to 7,000 parents and professionals across all social media platforms to come together and create a robust ecosystem. She is the recipient of She, the People's 40 over 40 Award, Gurugram Achievers Award in 2019, and in March 2023, she was awarded with One Special Woman by One Special Place. She believes in adding value in every life she touches. We are stronger together. That's her and the special mom's vision. I welcome Kriti on our show. Hi Kriti, I'm so happy that you're here. You have flown all the way from Delhi just for this podcast. I am so grateful for you. I mean, this is really means a lot to me because, you know, you have such a busy life, so many responsibilities of your kids and so many things that you're doing. So to take out time and especially come to Mumbai for this, I'm so happy. Thank you so much. Means a lot to me. So welcome on the show. And today we are going to talk a lot about your life, about your journey as a mom, as a special mother, and then creating your unique group for the mothers of special children, all of it and lots more. About your theatre also. So I'm very excited. So tell me now, where do you want to start from? Firstly, I want to start from thanking you for reaching out and quickly thanking Shilpi as well for connecting us. Yes. And it was a pleasure. It was fun to come all the way to Bombay I kept to do nagging this. you, na come. Yes, the nagging was also there. So let's give it 70-30. 70 was your nagging and 30 was my will. But I'm glad I kept on because But no, I had to wanted do to this. have you. I had to do this, Anurita. I had to do this. I love conversations. In general, I love conversations. And especially at this juncture of my life, if the conversations are happening around my passion, my whatever that I'm doing, whatever that I'm trying to do, the changes that I'm trying to bring, and the fun part of it as well, and the not so fun part of it as well. So if there's anybody who's willing to do that conversation with me, I'm there. And you're doing quite a lot.
You're doing quite a lot from your part. You're doing your bit and how, because as far as I have seen a lot of mothers, it takes a lot of courage to first of all talk about it, then encourage other mothers to talk about it and give them support and strength to open up to different people, unknown people, and share their sadness and pain, and then supporting them. It's incredible. So kudos to you. And so I would so let's start from the beginning. That's how I always feel. But for your beginning, I think let's start from theatre. Oh. I want to know you. So the fun part. Before Okay. you got married and before you had Oh, your okay. children. Yes. So every woman or every human being, why only woman? We all have different aspects. We all had different roles, and we've all had our own motivations to do anything in our lives. Theatre happened when I was all of 7 years old. 7. Yes, and knowingly or unknowingly, I was kind of thrown into it. Mm-hmm. And much before that, thanks to being the Bengali that I am, Be creative. every Durga Puja, we'd had this cultural program where we all the kids used to perform until the time we grew up. Also, we kept performing. So a lot of dance that used to happen, a lot of dance dramas that used to happen, but hardcore theatre happened when I was 7 years old, and I was kind of thrown into it because they were doing the local theatre group of Delhi, a very very well known theatre group of Delhi, was doing a play, and what do you call it, Jatra in Bangla. Okay, so the wandering theatre Yeah, artists, theatre artists. right? That's why the name Jatra. So they were doing this Jatra, and there was a role of this young kiddo, and they needed that kiddo. And so I got thrown into it, and I was like, oh, Kriti will do it. And I enjoyed my bit. And I still remember I had a scene in that Sorry. theatre where I had to roll Huh. on the floor. And there's this one tyrannical guy, maybe I don't remember. I think it was a Mughal based theatre. Okay. I don't remember the story that much. And he's lashing onto me with the whip. And I'm rolling and I'm shrieking and I'm shouting. And we staged that theatre in couple of places. So my shrieking and my shouting, I gained more and more confidence as I rolled on different stages. And it was funny. It was so funny. Oh, And as once upon a time, the director, God rest his soul, we lost him during COVID, and he was a very dear friend of the family as well. So at one point of time, we were rehearsing, and I was like all gunning for it, and this is my moment. This is when the stage is mine, and then somebody's whipping me, and I have to do this shot. So, and I started shrieking and shouting, and there were a couple of aunties who were buying vegetables. Oh, They shit. came rushing. What's Who happening was to the this kid little who's girl? shouting? Who was the kid? What happened? What happened? I was like, no, that is realistic. Acting. I was like, no, that is realistic. That is such a good That is actress. realistic. Wow, yeah. So that's how the theatre stint started. Have done a So lot nice. of plays after that. Have done a lot of dance dramas after that. Tagore dance dramas. Wow. And there's something that I don't share that much with people, but I'm sharing it with you right Please now. There was this Doordarshan serial Oh. which was starting at that point of time Mhm. about these 5 young detectives. I think it was Ek, Do, Teen, Char That's something. such a cool idea. So they were starting. So all of you, Ali Asgar and all those people have gained fame from that. I was called for the screen test. I passed the screen test, but my school never allowed me. Because at that point of time, I think Doordarshan had asked for a letter from the principal of the Parent. school. Principal का क्या लेना देना Yes, इसमें? she's okay to shoot, something like that. But she Okay. denied. She said no. She has a future ahead of her, and no, she's Principals not should going. let people act. So whenever I see that ad, still a couple of days back, there was a reel, old Doordarshan serials, and there was Yeah, these kids wearing jeans and checked shirt and hat, and they were in Appu Ghar. The title song was shot in Appu Ghar, and I had tears in my eyes. I said, oh Lord, I was one of them. So they were on cycles. So there was a Indian knockoff Hardy Boys. Ah. So they were on cycles and they were solving mysteries.
Nice. all around them. Oh wow, yeah. So Would have one- been nice if you're there, but it's I- okay. So anyway, so that itch never went away. It took me never to a know. lot of stages and a lot of places. Even in my real life also, you can ask the people around me. She's one drama queen. So that's about it. I'm now a couple of days back I was sharing it with somebody that I've met who's who's dabbling a lot into theaters and all. I was sharing it with him that, you know what, I want to come back. I want to go back to Yeah, theater you now. I want to must. go back to the stage now. It also what happens is, so at a before teens you started, and then maybe you Yeah. would have continued it till teens, and now that you have lived a certain life, being being a mother and a housemaker, so there's also a lot of things that as a person you go through, which sometimes talking just doesn't helps it to let go. Theater does that. Yes. It really helps you to, like acting, a lot of people really like understand their own emotions Correct. when they actually enact. That happens with me all the time. So please do it if you get an I opportunity. will. I'm looking for opportunities. I want to jump right into it now that I have a little bit Yeah, time, Yeah, and definitely. now that I have actually mustered the courage to do the things that I've always wanted to do, the things which have always defined me as Kriti. I'm mustering that courage. I want to do it. I'm thinking of writing as well. I'm going back to writing. Lovely. I used to write a lot once upon a time. I'm thinking of doing that as well. Yeah, you must, because your journey, because sometimes we think and we are not sure why are we writing, who are we writing it Correct. Correct. But I believe in the fact that every written word in form of a book or a novel has its own readers. It reaches the people who are meant to read it. Correct. So you Correct. must write. Your journey might Correct. help so many people. You never know. I might not write about my journey. Whatever. I mean, some things. Because you know, Anurita, it is there are days when it doesn't bring any happiness when I'm thinking about whatever that has happened. More so than anything, the incidents or anything that I've gone through, the helplessness out of it, the helplessness that I felt, it doesn't really help me. And I would not want to voice that when I'm, because some way or the other, I have become an advocate of autism for the parent community, especially for the mother. And there are so many people who are hanging on to each and every word that you're saying. So it will see, again, as I say, every creative, every book or every film or every song has its own journey. Sometimes we don't know. Today probably you think you're not ready for it. Tomorrow you might think that helplessness leading to your strength is the journey that you would like to share. True. So be open to it. And also accept it. आज नहीं मन कर रहा तो नहीं करना यार, कल होगा तो कर लेंगे. That's how it should be. True. So now I would really like to, I know it's a difficult topic, but you are a mother of a special child, and I would really want to talk about the journey. How did it, of course, when did you get to know? How was your first reaction? How was the support or not support of the society? What was the reaction of your near and dear ones, and how did you deal with it? So over to you then. So I just want to know how, firstly, let's talk about when did you first get to know? He was all of 18 months old, 17, 18 months old, my son, my elder one. I have two sons. Okay. And my elder one has autism. And he has something called, there's one spectrum of autism which is called PDD-NOS. It's an abbreviation. Okay. It stands for Pervasive Development Disorder Not Otherly Specified. Yeah, it's a mouthful. Okay. It's a mouthful. So I'm glad there is, it's specifically known also. Even though it's mouthful, it'll always depend on the medical practitioner that you are visiting. Okay, visiting. It will always depend on that, and how much time does that medical practitioner is willing to spend with you, making you understand whatever that is happening with you. Because everything is new. And so when this happened,
And what my son has is called the classic, absolutely classic regressive autism. Okay. He was attaining all his milestones, Okay. whatever that the child needs to attain by the time they're 16, 17 or 18 months old. And he started losing the primary ones. And primary ones, the first one was, of course, speech. Okay. The first thing that has Hmm. somewhat taken No, a... first thing when you registered it that a child your So child. the first thing that we saw was that he just stopped talking. He was That's what I'm babbling a saying. lot. He was saying a lot of things. He was trying to imitate you. And he was all around the house and running around and everything. So all of a sudden we saw him withdrawing. And the entire day, That's for actually- good 1.5, 2 hours, he was sitting next to the window with a spoon in his hand and kept shaking the spoon, keep moving it in front of his eyes and just sitting there. And we were wondering as to, I don't know what has happened. And then that very point of time, I became a mother again. I gave birth to my second son. And somewhere or the other, I started blaming myself for this early motherhood. When I saw him withdrawing, when I saw him not talking and all, I started blaming myself. I said, you know what, Kriti, there's a big mistake that you've done. You should not have become mother so soon. Maybe he's feeling threatened that someone is here to, take his space up. So, Okay. but then, of course, my fears were put to rest. It has nothing to do with whatever that I was thinking. We visited the doctor, of course, and we went for a regular vaccination to the pediatrician. And all thanks to the pediatrician. And there's a huge thing about the pediatrician in our country also, Anurita. They are not aware of autism. They Very, are very not true. aware. They're And not. when during the course of my work, I have met a lot of pediatricians all across the country. And not all across the country, but few of the Whoever, cities. And it was very disheartening to know that when they were doing their pediatric study, there was only one little paragraph about autism in their books. That's it. And it was very disheartening. And my next question always used to be that why hasn't it fueled your curiosity? Yeah, I mean, being And, a doctor, yes. But then again, now wherever we are, doctors are aware. Doctors But I also are think curious. that, yes, as you're saying, there was not a lot of awareness about it, so maybe it was hence, not. It was not. It yeah, was hence not. there's no the need of learning about it more. Post COVID, things have gone Yeah. crazy when it comes to awareness. Also because of I'm so social thankful. media. Yeah. People are not thankful to COVID. I'm secretly thankful to COVID. Because of social media, All also of people a are talking. sudden, Yeah. all of a sudden, even your grannies on social media now. Yeah. Yeah? Yeah. Even your grannies and grandpas Yeah. are on social media now. Yeah. Even they know how to handle a smartphone, Yeah. right? Correct. So though they'll probably going to keep asking you question, "Ye WhatsApp pe ye photo bhej de," I mean, that's Yeah. cute of them. Correct. But everyone that's is what. connected So, in a different way. so thankfully, our pediatrician was well aware of this Mm. condition, and when we went for the vaccination, he started pointing out a couple of things about my son. Mm. Why is he not smiling? Why is he not looking at me? Why is he not responding to his name? So something is happening. So he then suggested us to go and visit a very famous child psychologist in Delhi. And when we went there, the child psychologist spent close to 1.5 hours observing my son. And I and my husband, we were just sitting there, just waiting for some sort of an outcome or something to come Before out. this, you had no idea No, about what you no, were getting. no, like no, what no, you- absolutely no, absolutely no. So there's a joke amongst my family and my friends about me. They say अंग्रेज चले गए कृति को छोड़ गए. क्यों? So I'm an Angrez. So I'm a linguist. I'm an Angrez and all. So even this Angrez was not aware of this term called autism. In that And when it came, and then the doctor said it's called autism, and autism का भी एक ये part है which is called PDD-NOS. He wrote it. I still remember. And they said PDD-NOS is pervasive development disorder, not other specified. And so there's this amazing thing about my husband. He doesn't lose his calm. And he tries to, whenever you throw him into a very difficult situation, he will always would want to see everything objectively. And That's a though very we both were great taken quality. aback and he knew that mera to ho gaya. Mm. So then he was like, no, we cannot be like this. We have to read about this. Then and We there. get to know about this. Yes. My God. When we were Definitely walking he out, has his when we were walking out of the clinic, he was like, no, we have to know about this. We have to learn about this. Because अभी हमारे दिमाग में या हमारी जिंदगी में we just have one goal
कि हम इस बच्चे की मदद कैसे कर सकते हैं. मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है, तुम्हें भी नहीं पता ये क्या चीज़ है. Let's start connecting with people, let's start talking, let's start doing research and everything, and let's abreast ourselves with this. Whatever that has happened, whatever that has happened with us. Yes, we both were shocked. Yes, we both were sad. But then, thanks to him, he helped me channelize that sadness. That's And seeing us holding our ground about this, seeing us not losing hope about our son from the day one itself, I think that helped our immediate family also, the immediate and the extended family also. If I would have started crying and breaking down, if my husband would have cried, he would have broken down, if we both would have, started feeling really bad about it, hey Bhagwan, aapne hamare sath kya kar diya, if we would have started wallowing, so I think that would have shaken our family a lot. Yeah. So that's what has helped our families, and they realize कि इन दोनों पे अभी छोड़ दो, let's see what happens, let's see wherever life takes us. And we were very, very honest about it. We were very open about it. We've never hidden our son from anybody. We have very candidly talked about him. Whosoever had come to our place, whosoever had seen our son, they have asked questions. We were very honest about it. Because हमें लगा छुपा के कोई फायदा नहीं है. I mean, ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि सबसे फर्स्ट स्ट्रगल और सबसे पहला जो पड़ाव होता है जो पेरेंट्स पास नहीं कर पाते हैं वो यही होता है. मुझे आप बताओ ना किस और प्रकार से आप अवेयरनेस ला सकते हो? नहीं लाते हैं लोग, घरों में आपको छुपा के बात रखते हैं. करनी पड़ेगी, आपको करनी ही I पड़ेगी mean, you बात had इसके that बारे में. awareness, and your husband is like, as you said, हमें he's very. कुछ नहीं पता था इसके बारे में, कुछ कैसे नहीं पता रहेगा? कुछ नहीं पता था. He is well educated. This is how भगवान many कृपा, years I have back? also done whatever that I have to do in Yeah. education. But नहीं पता था, This नहीं is पता how था. many years back? This is 2011. Almost 13 years. 2011. All this was happening in 2011. Okay. And so this happened, and then I think we both held our ground very firmly कि बॉस नहीं पता क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमको समझने दो, उसके बाद तुम लोगों के इमोशन से निपटेंगे, पहले हमें समझने दो. What do you mean by तुम्हारे इमोशन से निपटेंगे? बाकी लोगों के इमोशन, है हमारा बच्चा, हे भगवान क्या होगा, ऐसा हो रहा था आंसरिंग आपके दोस साथ? क्वेश्चंस. ऐसा हो रहा था आपके साथ? मुंह पे आके नहीं पूछ रहे थे, बट हाँ ये सवाल थे. अच्छा ये क्या होता है, अब क्या होगा, ये ऐसे ही रहेगा क्या, अब ये ठीक नहीं होगा क्या, ये स्कूल जाता है क्या, ये स्कूल क्यों नहीं जाता. उसी मतलब 18 महीने के टाइम पे बाद में आने लगे ना ये धीरे धीरे करके, बाद में आने लगे ये as सब, he was growing and धीरे धीरे करके बाद में आने लगे. देन ऑफ कोर्स सोसाइटी एट लार्ज केम इनटू पिक्चर, क्योंकि हमारा बच्चा पार्क जाने लगा, खेलने लगा, लोगों से मिलने लगा. ये ऐसा क्यों है, ये क्यों नहीं बोलता, ये आपका कपड़ा क्यों चबा रहा है. And the difficult phase I don't begins know. when your child is little, when he's small, he's cute, he's sweet. Yeah. So बच्चा है, उछल रहा है, कूद रहा है, ठीक है. But suddenly there's something called adolescence which comes into picture. When your child is Suddenly growing taller. he's taller, he's stronger, he's physically stronger than you and everything. And at that point of time when he's showing his autistic traits, because he can't help it, that's what he is, तब आ जाती है मुश्किल. बहुत मुश्किल आती है. तब आती है मुश्किल. So anyways वो तो अलग कहानी है. So नहीं मतलब उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी उसके बारे में, इसलिए क्योंकि बहुत मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इतना अगर हमारा बच्चा वायलेंट है तो ये कभी नहीं ठीक होगा, अभी ये एग्रेसिव है तो ये कभी नहीं ठीक होगा. एक बहुत मजेदार किस्सा सुनाती हूँ. people losing hope and like closing themselves in their homes, and it's very important to talk about it because you're sitting here in front of me. This is the biggest example. That's what I'm trying to say. So एक छोटा सा रिक्वेस्ट तुम्हारे इस कॉन्वर्सेशन के थ्रू करना चाहूँगी. अगर आज एक पेरेंट डिसाइड करता है आई नीड टू शट माई सेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड, उसे करने दीजिए, क्योंकि ये उसका तरीका है टू कम इन टर्म्स विद एवरीथिंग. बिकॉज हमें ये सोचना पड़ेगा कि एक पेरेंट जो
इसका जिसका बच्चा बड़ा हो चुका है, जिसका बच्चा 13-14 साल का हो गया है, 10 साल का हो गया, 11 साल का, वो लास्ट 8 साल से इस चीज़ से जूझ रहा है। करेक्ट। वो थक चुका है, उसकी हालत ख़राब हो चुकी है। वो किस किस से जाके क्या क्या बोलता रहेगा यार, वो एक्चुअली में बहुत थक चुका है। सो अगर आज वो डिसाइड करता है कि लेट मी क्रॉल बैक अंडर दैट रॉक ऑफ माइन, प्लीज़ उसे करने दीजिए। थोड़ा समय उस इंसान को, बेचारे को दीजिए, स्पेशली उस माँ को दीजिए जो तैयार नहीं थी। इट इज़ नॉट अ जोक। एक माँ 9 महीने बच्चे को रखती है अपने पेट में, फिर बहुत मेहनत से पैदा करती है। नो मैटर व्हाटसोएवर हूसोएवर टॉक्स अबाउट चाइल्ड बर्थ, इट इज़ नॉट ईजी, इट इज़ नेवर ईजी। चाइल्ड बर्थ को तो मारो गोली, चलो वो तो थोड़े घंटों में ख़त्म हो जाएगा। मेन स्ट्रगल उसके बाद शुरू होती है। जब तक बच्चा खेल रहा होता है, घर वालों के पास होता है। जैसे ही बच्चा किसी प्रॉब्लम में पड़ता है, सूसू कर दिया, पॉटी कर दिया, उल्टी कर रहा है, भूख लगी है, अरे तेरी मम्मी कहाँ है? आई नो। जब बच्चा खेल रहा है, कूद रहा है, द बच्चा इज ऑल क्यूटी एंड बैबलिंग एंड ब्ला ब्ला ब्ला, तब सारे घर वालों के पास होता है। करेक्ट। इफ एनीथिंग दैट्स गोइंग रॉन्ग, तब वो माँ के पास होता है, तब लोग माँ को ढूंढते हैं। बहुत बड़ा पेन है माँ का। ये बच्चे को कुछ भी हो जाए, आप अभी भी देख लो यार, जिनकी जिंदगियों में माँ है, 1:30 बजे 2 बजे आपके दिन में आपके पास फोन आएगा ही आएगा, चाहे आपकी उम्र 50 साल की उम्र हो। हाँ, कैसा हो, क्या लंच कर लिया, लंच कर लिया, क्या खाया? क्यों करती है वो? उसको पता नहीं है क्या बच्चा बड़ा हो चुका है, बड़ा बुढ़ा हो चुका है। That's how it is the mother. माँ से तुम माँ होना कैसे ले सकते हो यार? नहीं ले सकते हो, नहीं ले सकते हो। तो सबसे बड़ा पेन उसका है, सबसे बड़ा दुख उसका है, सबसे बड़ी खुशी उसकी है। आज दुनिया आपके सामने आके दिखावा करके जाएगी खुशी का, ओ वेल डन, कंग्रेचुलेशंस, असली खुशी तो उसकी है जो कुछ नहीं बोलेगी, आके एक थप्पड़ मार के आपके पीठ पे चली जाएगी। या सडनली जब आप घर जाओगे कोई अचीवमेंट करके, आपका फेवरेट खाना मिलेगा, आपको मिलेगा, आपने तो नहीं मांगा था, करेक्ट, बट शी नोस, पर मिलेगा। आपका बर्थडे आएगा, आप पागल नहीं होगे, वो पागल हो जाएगी। No, my point of saying. So I'm saying is that if she's crawling under that rock, let her deal with it. Let her deal with it. And secondly, एक चीज मैं आपके conversation के through, if I hope this reaches as many parents and as many families it can, and especially to all those mothers who are thinking when will this end. So बहुत senior parent हैं, when I was going through a very very difficult phase of my life with my son, that's when that parent said कि कृति इसको मंत्र बना ले अपना, and that is this too shall pass. आज तू ये फेस कर रही है ना, ये फेस खत्म हो जाएगा, फिर कुछ और आ जाएगा, फिर वो भी खत्म हो जाएगा, फिर करते करते फिर कुछ नया आ जाएगा। बिकॉज पेरेंटहुड, स्पेशल नीड पेरेंटहुड क्यों, स्पेशल नीड मदरहुड क्यों, एनी पेरेंटहुड, एनी मदरहुड, वो एक अनएंडिंग विशियस सर्कल है, खत्म ही नहीं होगा। वो कुछ ना कुछ आगे तुम्हें परेशान करता ही रहेगा। It'll never end. Motherhood is not funny. मतलब भी मज़ा भी है उसमें, जितना मज़ा है उसका 100 टाइम ज़्यादा उसमें पंगे हैं, प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं। सो ये मंत्र उन्होंने मुझे दिया था, दिस टू शैल पास, और मुझे इतना हेल्प किया ना उसने, आई कांट टेल यू। मतलब प्रैक्टिकली आपने एक्सपीरियंस किया है? आई कांट टेल यू। मैं जोर से बोलती थी उसको, जब भी मैंने देखा कि देयर इज वन सिचुएशन दैट आई एम इन दैट आई डोंट वांट टू बी इन, आई डोंट वांट टू नेम दोस सिचुएशंस हियर, बट जब मैं देखती थी ना कि नहीं करना भैया, मुझे भैया थैंक यू भगवान, हो गया, फिर मैं खुद को बोलती थी यू नो व्हाट कृति, दिस टू शैल पास, दिस टू शैल पास, हो जाएगा। और हुआ, ऑफ कोर्स हुआ। एंड तो इसीलिए ये एक चीज़ मैं हर मदर को बोलना चाहती हूँ। ये सब बोलना बहुत आसान है, प्लीज डोंट लूज होप। अरे लूज होप यार, बी होपलेस, बट बिकॉज दैट्स द ट्रूथ। यू कांट बी। और एक और पंगा पता है क्या, बड़ा पंगा क्या है? द मोमेंट दुनिया को पता चलता है ना कि आप स्पेशल नीड माँ हो, कुछ हो, ओ यू आर अ सुपर ह्यूमन, यू आर अ सुपर वुमेन। अरे बंद करो बोलना, उसका दिमाग मत खाओ। क्यों खा रहे हो उसका दिमाग? मत बोलो सुपर ह्यूमन, मतलब उसको बोलो तू सुपर ह्यूमन नहीं है, तू नॉर्मल औरत है, तेरे भी सर में दर्द होगी, तेरे भी पेट में दर्द होगी, तुझे भी सुबह उठने का मन नहीं करेगा। नॉर्मल रखो जिंदगी उसके आसपास, बट ये अप्रिशिएट करो उसके एफर्ट्स। बट मैं ये जो आप ये बोल रहे हो, यू
ऐसा होता है लोगों के साथ कि आपको लोग आके बोलते हैं दैट इरिटेट्स यू? या इट इरिटेट्स मी नाउ। पहले बड़ा अच्छा लगता था, झूठ नहीं बोलूंगी। अरे वही वाह, मैं जानना चाहती हूँ कि अरे वाह, आई फेल्ट सो गुड। लोग कहते वाह तू तो सुपर ह्यूमन है, तेरी प्रॉब्लम तो हमसे 100 टाइम्स ज्यादा है कृति। एंड कृति यूज्ड टू ग्लोट। हाँ यार, यू राइट। तुम्हें क्या है, तुमने सुबह उठ के बच्चे का लंच बना दिया, उसको स्कूल भेज दिया, सारा दिन तुम फ्री हो, लुक एट मी। पहले मैंने भी ग्लोट किया है यार, अच्छा लगा है सुन के। बट देन उसके बाद मुझे समझ में आया कि दिस एक्चुअली हैज एन एडवर्स इफेक्ट ऑन माई साइकी, because then what I'm doing is I'm foreboding everything in my life, and I'm thinking अरे ये तो मेरे, it should be up my alley यार, मैं तो super human हूँ। And that's when the dejection used to fall in. you अरे मैं नहीं कर पाई। over expectations from your own self, and हाँ। then नहीं होने से it's a spiral down way. So this is genuine request. Yeah. Genuine Take every day request as to it comes. everybody. Yeah. Genuine request to everybody from the other side of the table, as I call it. Don't tell that mother that she's a superhuman. Please tell that she's courageous. Please tell that you're with her. That's more important, ना? Just I'm here. Just call me. Need me. Call just me. yeah. खाना चाहिए तेरे को? कुछ भी. तेरे को छोटी हाँ, बहुत चीजें तेरे को कुछ भी. अच्छा. And it's not. I don't think so. These are bigger things in life. Smaller things and smaller moments. Call चल ऐसा walk पे चल के आते हैं करके, you know? छोटा. Walk को मारो गोली. You know, this parent or this mother has not stepped out of her house for the 5 days, for 6 days. कुछ नहीं. फोन कर. Meet भी मत करो. Probably she'll get very uncomfortable. You coming over. You never know. Yes. भारतीय हैं हम यार, कोई अगर घर पे आता तो चाय पानी पूछना पड़ेगा, ये नहीं करना बॉस, ताकत नहीं है चाय पानी करने का। फोन कर, खाना खाया तूने? मैंने ये सब्जी बनाई है, तुझे दे जाऊं? रोटियां बना दूं तेरे लिए? बेटा क्या खाएगा तेरा? पराठा बना दूं? चावल खाएगा? मैंने सांबर चावल बनाया, ले आऊं मैं तेरे लिए? जो आप बातें बोल रहे हो ना, these are so real. These are so real. It's not superficial कि मुझे अपने बेटे को माउंट एवरेस्ट चढ़ाना है। यही तो है यार, और क्या है? मैं वही कह रही है, जो हर रोज की चीजें हैं ना, this is everyday struggles. यही तो है। That's the most difficult part. Ask the question. देखो, जितना तुम्हारा मन करेगा ये बोलने का या करने का कि हाउ कैन आई हेल्प योर सन, और हाउ कैन आई हेल्प, उस पेरेंट को, उस माँ को मत पूछो हाउ कैन यू हेल्प योर सन। उस बेचारी को खुद को ही नहीं समझ में आया अभी तक कि अपने बच्चे की हेल्प कैसे करे, चाहे वो बच्चा 20 साल का हो गया, 22 साल का हो गया हो। बट येस, यू कैन हेल्प दैट मदर, यू कैन हेल्प दैट फैमिली। अवेयरनेस का मतलब ये नहीं होता कि आप झंडा लेके राष्ट्रपति भवन के सामने चले गए। ऑफ कोर्स नॉट। कोई रेवोल्यूशन नहीं लाना। अड़ोसी पड़ोसी से बात करो लो ना प्लीज, उनको बोलो ना, अड़ोसी पड़ोसी को बोलो ना, वही तो है। और क्या है, तुम हर रोज राष्ट्रपति भवन नहीं जाओगे, तुम हर रोज उस कॉलोनी के गेट से अंदर बाहर करोगे, और दिन में 50 बार करोगे। और सबसे मुश्किल वही होता है रहना। Exactly. क्योंकि आपके आसपास के लोग आपको जैसा फील कराते हैं, तो आप भी उनसे बात करो। हमने भी किया है यार। The incident that has happened with me, that somebody called my son पागल। यही तो प्रॉब्लम है। So they called him पागल, and I got very angry. मैं how dare you? So at 9 o'clock at night I was pounding at their door कि दरवाजा खोल। So दिल्ली वाली इन मी जाग गई, pounding at their door, दरवाजा खोल, तूने मेरे बेटे को पागल कैसे बोल दिया? I never even waited for them to open the door properly. मैं एकदम प्रॉपर सुपरमैन की तरह धड़ाम करके दरवाजा खोल के अंदर घुस के लड़ झगड़ के मैं आ गई, लड़ झगड़ के चीखम चिल्ली करके I was back. And then after that I was wondering मैं कहाँ तक ये करती रहूंगी? कितने लोगों को बोलूं? कितने लोगों के साथ मैं ऐसे बात करती रहूंगी? ये बर्ताव होगा मेरा, मैं तो थक जाऊंगी एक दिन। So what I did was I छापुड़ वन चिट्ठी, I put my son's picture on it. मेरे कॉलोनी में कुछ, उस टाइम पे जिस कॉलोनी में मैं रहती थी, कुछ 500-550 घर थे। I छापुड़ अ चिट्ठी, I wrote about him. I said भैया हम इस एड्रेस में रहते हैं, इस घर में रहते हैं, हमारा एड्रेस ये है, ये मेरा बेटा है, इसको ऑटिज्म है, तो आप ये देखोगे उसको करते हुए, और जब वो चैलेंजिंग बिहेवियर में होता है तो ये करता है। उसके नीचे लिखा, मैंने फुटनोट में लिखा, आपको कुछ नहीं करना जब आप उसको चैलेंजिंग बिहेवियर में देखोगे। आप मुझे फ़ोन करोगे, अगर मैं साथ में नहीं हूँ तो, या तो आप दूर रहोगे उससे। लेकिन अगर आप मेरे बच्चे को देखोगे खेल रहा है पार्क में या कुछ, प्लीज़ कम एंड से हाई टू हिम, वो इस पार्क में इस समय से इस समय तक खेलता है। और चिट्ठी मैंने बंटवा दी पूरे कॉलोनी में। एंड राइट नाउ
through our platform, the platform that we have created to help families, Yeah. and especially the mothers, Special mothers. it is, Yeah. we have something called neighborhood awareness program, Mm. where all the mothers from different parts of the country have come forward and they have translated that letter in their own vernaculars, Mm. and that letter has been shared with their own residential colonies. That is such a good idea. There are parents from Pune that have done it, in Oh. Marathi, in Bombay, that has been done, in Punjab, the That letter is has been actually translated a in very Gurmukhi. practical way of making people Yeah. aware. Oh, that's such a good So idea. that's a neighborhood actually. awareness that we have started, Oh. and which has gone very well, which is still going on. People are still मतलब लोगों को पता तो है कि अच्छा ये बच्चा है, इसको ये इश्यूज so है. ये 10-12 लैंग्वेज की चिट्ठियां हमारे फेसबुक ग्रुप में है. So any mother who wants it just goes there, Please downloads the tell chitti. about your Facebook group name, the special. Okay, it's mothers. called the Special Mom. Special Mom. We started yes. from Facebook because मुझे इतना नॉलेज नहीं था कहाँ से क्या कर हाँ. सकते हैं. मुझे लगा कि फेसबुक का रीच बहुत ज़्यादा है उस हाँ. टाइम. अभी भी है. So we started from Facebook, Hmm. the Special Mom. It's called the Special Mom. It's on Insta as well. It's on Yes. LinkedIn as well now. And we have a huge WhatsApp community. Hmm. We have 31 live groups in that community. Wow, that's a lot. Yes, and all those 31 live groups. yeah, 31 groups have इससे ये 31 भी- different subject matters. ये That's इससे भी पता चलता है कि it's so much needed. It's so much. I mean, people need to talk about it. That's why these groups are live. No, otherwise नहीं होता तो they would not exist. एक non-judgmental जगह चाहिए. Of course चाहिए. सबको चाहिए. सबको चाहिए. एक safe अपने space घर में भी चाहिए. एक नॉन जजमेंटल फ्रेंड चाहिए होता Safe है space कि चाहिए. आप जब कुछ ऐसे किसी की बुराई करनी है, कुछ अपना रैंट करना है, वो आपको कुछ नहीं करना होता है, वो फ्रेंड को बुलाओ, बोलेगा हो गया तेरा, अब मैं जाऊं. So this is how it is. So tell me, when you published about your son's condition in your society, was there a positive response? Yes. That's good. There's That's so incredible. many people who used to Hmm. go for their evening walks and all. हाँ. They actually detoured Ah, towards that park. nice. And from a distance, they started calling his name and saying hi to him. Oh, that's so nice. I'm There's getting so goosebumps. there's so many people who invited themselves over Ah, at my place. so They that just wanted to meet him. They just wanted to say hi. And when we did his birthday that year, my house was bustling. There were so many people who have come over. So many. And those people, though I have left that residential complex, we have moved from there. Mm. There's a bunch of people who are still in touch with me. A bunch of people who still come over. They still ask about my son. Mm. They are still aware. What is he? Where is he? What is he doing? What is he up to? you know, so you educated everybody through a pamphlet. Yeah. And they're gonna educate many more people through their Yes. own experiences. Yes. Such a That is how awareness begins. I Yes. don't. और सच बताओ अनुरिता, मुझे ना समझ में नहीं आता ये सब अवेयरनेस ड्राइव्स एंड एवरीथिंग. नहीं, ड्राइव की बात नहीं, ये ड्राइव इन इटसेल्फ है. बेसिकली आप लोग कहते हैं कि ये इंस्टा पे करो, ये करो. आपने सिंपल सा एक पैम्पलेट निकाला, आपने एक वो पब्लिश किया, और उससे जो जो मेन मतलब जिस एरिया में आपको फोकस करना था कि लोग जाने उनका बिहेवियर मेरे बेटे की तरफ ऐसा हो या ना हो, जो नहीं कर सकते हैं वो अलग चले जाएं. एंड यू डिड दैट. इट्स सच हमने बहुत कुछ किया. हमने लोकल पुलिस थाने में भी जाके बात करी है. सो नाइस. पुलिस वालों से भी जाके बात करी. थैंक्स टू अ वेरी सीनियर पेरेंट इन आवर कम्युनिटी. She took this on herself and we accompanied her. She said, Kriti, चल साथ मिलके करेंगे. I'm very thankful to her. We went to the commissioner of police. We visited him, and he rounded up all the SHOs and inspectors of Gurgaon. And because उस टाइम पे ना ऑटिस्टिक बच्चों का ना बहुत ज़्यादा वॉन्डरिंग ऑफ वाले केस हो रहे थे. अभी भी होते हैं. They just wander off. And so जिसको बोलते हैं ना फीट ऑन स्ट्रीट, उनको बताना बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसा सिचुएशन कैसे हैंडल करेंगे. तो वो ट्रेनिंग उनसे जाके बात करके आए हैं हम लोग. कॉलोनी के गार्ड्स, स्कूल के गार्ड्स, नॉट ओनली स्कूल के गार्ड, जिस स्कूल में बच्चा जा रहा है, जिस थेरेपी सेंटर में बच्चा जा रहा है, उसके आस पड़ोस के लोग, साथ में कोई दुकानदार है, चाय वाला है, कोई बीड़ी वाला बैठा है, कोई दुकानदार बैठा है थेरेपी सेंटर के आसपास, कोई ऑटो वाला है, कोई ऑटो स्टैंड है वहाँ पर. सो वी एक्चुअली डन ऑल दिस. मुझे लगता है कि बहुत ना बेसिक लेवल पे बहुत
कुछ भी हो अनुरिता, जिंदगी का कुछ भी हो, हाँ। बेसिक लेवल पे काम करो यार। और ये बहुत देखो ऊपर ऊपर की बातें तो बहुत लोग करते हैं, पर जहाँ एक पेरेंट और एक बच्चा आता जाता है उस लेवल पे जो ये आप Exactly. अवेयरनेस ला रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ऑटो वाला, उस एरिया Even the के जो sweeper, स्वीपर है, उनको पता है कि maids of the उनको तो colony, सारे रास्ते पता है ना। maids of the करेक्ट, colony, एवरीबॉडी, sweeper. गार्ड्स, यस, क्योंकि दुकान It's वाले very तो रोज ही important. बैठते हैं वहां पे, दे सी द एवरीबॉडी कमिंग एंड गोइंग। even the सब्जी वाला who's coming inside yeah, आपके कॉलोनी में, vendors. आपके 4-5 दूध वाले आ रहे हैं आपके कॉलोनी में दूध देने आपको दैट्स सुबह। सच अ मतलब So, उनसे बात करना बहुत जरूरी वेल है, थॉट थिंग टू डू। इनसे बात करना बहुत जरूरी है। यही हैं असली लोग जो नजर रखेंगे, एंड दैट हैज ऑलवेज हेल्प पर्सनली मेरे लिए। तो हम जब नए अपने कॉलोनी में शिफ्ट हुए, इट्स अ ह्यूज कॉलोनी, इट्स अ ह्यूज स्पेस, एंड माय सन लव्ड रनिंग अराउंड, और खेलते खेलते कभी किसी गेट से बाहर तो कभी किसी गेट से बाहर, एंड इट्स एन इंटरकनेक्टेड ओके, कॉलोनी। सो एक गेट से बाहर जाएंगे तो यू विल गेट टू द अदर पार्ट ऑफ द कॉलोनी। सो ऑल द गार्ड्स न्यू वो आ रहा है, अच्छा, ए भागो उसके पीछे, या गेट बंद कर दो, अरे आ रहा है, गेट बंद कर, गेट बंद कर। और ऐसा नहीं कि उसको दिखा के गेट बंद कर रहे हैं, उससे प्लेफुली बात करके, उससे वो करके, अरे अरे आप यहाँ आ गए, चलो चलो हम उस पार्क में खेलेंगे, कि दे यूज्ड टू टेक हिम बैक। दैट्स बिकॉज सो आपने उनको मतलब ये जो आपने एजुकेट किया उनको, उसकी वजह से अगर वो एजुकेटेड नहीं होते तो प्रॉब्लम उनका बिहेवियर अलग होता। तो एक बहुत बड़ी चिंता दूर हो जाती है। बिल्कुल दूर हो जाती है। सो दैट्स वाई छोटे छोटे लेसन्स थे जिसकी वजह से ये प्लेटफॉर्म शुरू किया था मैंने, और मेरा एक होल एंड सोल यही मेरा पर्पस था मैं कि मुझे चिंता खत्म करनी है किसी तरीके से। माँ की चिंता खत्म कर देती हूँ किसी भी प्रकार से। खत्म हुई है, हो रही है, हो रही है, गेटिंग देयर। it will, because see, The the thing parents and the moms who are associated with the special mom platform are smarter. That's what I can is say. you're very smart and also very you have to, you think uniquely. You're not thinking about the typical life journey, because you are prepared for many other things that are not like a person of a neurotypical child are not, because you are playing a chess. ये हुआ तो ये हुआ तो ये हुआ तो ये हुआ तो क्या करूँ? Correct. You are actually thinking in all directions and then trying to bring a solution not only for today and tomorrow, for a lifetime, and not only for you, for all the parents, right? So now I want to ask you this question, which we had spoken on the phone. What brought you to the point where you started Special Moms? There was a point in time in your life where it was, if I may ask, that you were not that motivated or not that positive. Was there a point in your life, like in your time in your life, when you felt the helplessness the maximum, and probably आप मतलब होता है ना कि यार बस हो गया अब, मतलब, and then what hope, क्या ऐसा हुआ that gave you the hope, if there is anything like that? I would really like, yes, because yes, क्या होता है there ना, is, आपकी there बातें is. सुन के बहुत सारे लोग hopeful होंगे, There is, तो there is. sometimes I know it's very personal at times, and if you don't want to share, I would totally be okay. No, I would want to, because मुझे इस चीज़ को, thank you for that question पहले तो, because मुझे इस चीज़ को normalize करना है। हाँ, वही सबसे I बड़ी want बात to है। normalize Sorry, it. this is a very filmy example I'll give you. तो when I had my first breakup, I thought the world is over. मैं मर रही हूँ, मेरा दिल इतना दर्द हो रहा है कि भैया कोई नहीं जानता मैं क्या गुजर रही हूँ। बट फिर मैंने कहा, ओह शिट, इसका भी ब्रेकअप हुआ है, अरे दोबारा भी हुआ। मैंने कहा, ओह ये तो नॉर्मल है। हाँ, I'm not, there is no comparison here, sorry. नहीं अब बिल्कुल ठीक बोला आपने। Of course, maybe incident wise चीज़ें different हैं, but then thought wise same है। But if another parent, they hear, ये normalize करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। और yes, मेरे लाइफ में भी हुआ था ऐसे, बहुत टफ चल रहा था, बहुत ही ज़्यादा टफ चल रहा था। 2 बच्चे बैक टू बैक, ऑलमोस्ट बच्चे ऑलमोस्ट एक साथ ही बड़े हो रहे हैं, सेम उसमें। लाइफ वॉज क्रेजी, समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा था मुझे कहीं से। देयर वर पीपल हु वर अराउंड मी, मैडली इन लव विथ मी, बट उन बेचारों को समझ में ही नहीं आ रहा था मेरी मदद कैसे करें, बिकॉज आई वॉज शनिंग एवरीबडी अवे। क्योंकि मुझे तुम्हें सिखाने का समय नहीं है कि मैं तुम्हें क्या सिखाऊं, कि तुम क्या करोगे, कि इससे बेटर है कि स्टे आउट ऑफ इट। सो one of those days, very very tough, that was the first incident of my life which made me realize something very important. And so we used to go to a therapy center.
Mm-hmm. My son was all of what, 3-4 years, 4-5 years old. Okay. एंड सो थेरेपी सेंटर में बाहर एक बड़ा सा रिसेप्शन था जहाँ पे ऑल द पेरेंट्स यूज टू वेट. Mm-hmm. They used to wait for the child's therapy to Hmm. finish. Typically one therapy session used to take 45 minutes or 50 minutes or something. So एक बहुत बड़ा reception area था where parents used to wait. So I saw this one very senior parent sitting वहाँ पर. Her son at that point of time was all of 14-15 years old. Very difficult phase of their life, adolescence. Lot of mara-mari was happening. And my son 4 or 5 years of age, वो गया अंदर थेरेपी सेंटर पे गया और मुझे अंदर से आवाज़ आ रही है. वो जो बैठी हैं लेडी, उनका बेटा अंदर मार कुटाई कर रहा है. मतलब he's violent. He is super violent and shrieking, shouting something, and they're trying to subdue Calm him him or down. anything, calm him. And then I saw that mother. She was sitting aram se. She was, I think, reading a book or something. And I was like, hello, How what is come? happening? Yeah. What is happening? What are you eating? And उसके थोड़ी देर बाद my son also started crying. He was very small. He started crying and I couldn't take it. And that one particular day I was having a very, very hard time with everything around me. And I broke down. I started crying. I was like, I'm not able to take it anymore. ये क्या हो क्या रहा है यार? थेरेपी, डॉक्टर्स ने बोला थेरेपी कराओ थेरेपी कराओ थेरेपी कराओ. अब भाग भाग के मार के मैं इसको थेरेपी के लिए ला रही हूँ इतना मुश्किल से लाइफ में. अब वो वहाँ पर भी रोना पिटना घै घै घी घी. ये क्या हो क्या रहा है यार मेरे साथ? एंड दैट मॉम वॉकड अप टू मी बिकॉज आई वॉज क्राइंग. और मैंने रियलाइज नहीं किया था अनुरिता दैट आई एम क्राइंग, दैट आई ब्रोक डाउन. मुझे नहीं पता था कि आई हैव ब्रोकन डाउन. शी वॉकड अप टू मी. माइंड इट, उसका बेटा अंदर है, घूसा लात सब चल रहा है उसका अंदर. She walked up to me and I think for a mother, for any mother, she asked me the most important 3 letters of my life. 3 words of my life, not letters, sorry. 3 words of my life. And it was not I love you. It was, are you okay? Oh my god. Sometimes you just need somebody to ask you that. I met that mom, that senior mom is a very, very good friend now. She still keeps an eye God on me. bless her. She God still bless. keeps an eye on me. Yeah. क्या कर रही है, क्या चल रहा है. She still keeps an eye on me. And whenever I go, wherever I go, whichever platform, whichever talk show, whatever that I'm doing in my life, any public that I'm facing, I always cite this incident. I always cite and I always thank her. She asked me the most important questions of my life. Are you okay? And I broke down. I started crying. I was not able to take it anymore. रो भैं करके एंड चुपचाप बैठी थी मेरा हाथ पकड़ के. वो रोती रही, मैं रोती रही. एंड देन शी वाज लाइक, एंड उसका बेटा बाहर आ गया, उसकी थेरेपी खत्म हो गई, मार कुटाई करके वो बाहर आ गया. तो देन शी वाज लाइक, शी टुक माई नंबर, शी सेड आई विल कॉल यू. एंड उसका बेटा तब भी फैला हुआ है मेजर. माँ को भी बाल खींच के मार के कुछ को खींच के माँ को भी ले गया बाहर क्योंकि थेरेपी खत्म हो गई थी. एंड सीरियसली 2-3 घंटे बाद शी एक्चुअली कॉल्ड. एंड आई थॉट शी इज नॉट गोइंग टू कॉल मी, ऐसे ही नंबर ले लिए. शी एक्चुअली कॉल्ड. वी स्पोक फॉर गुड 1.5 hour और समथिंग, 1.5 hour. शी सेड डोंट वरी, चिंता मत कर, अच्छा ये देख, अच्छा वो देख, कुछ समझाया उन्होंने मुझे, छोटा है अभी, थोड़ा देख प्लीज़. बहुत सारे ऐसे फिजियोलॉजिकल रीजंस भी हो सकते हैं कि बच्चा परेशान हो रहा है, उसका नाक बंद तो नहीं है, उसके दांत में दर्द तो नहीं है, उसके पेट में दर्द तो नहीं हो रहा, वो अभी भी डाइपर पहनता है, उसको खुजली तो नहीं हो रही क्योंकि गर्मियों का टाइम है. तो व्हाटएवर इट इज, आई मीन शी स्टार्टेड टॉकिंग टू मी. रात को फिर फोन आया, कैसी है, क्या कर रही है. Oh my god, she knew you needed somebody to talk. That's all. दिस वॉज द फर्स्ट इंसिडेंट Wow. जो यहाँ रह गया. यहाँ रह गया कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल. कोई आके ये सवाल पूछ ले भैया हमसे, आयु ओके, ठीक है, शायद मैं झूठ बोल के बोलूँगी या आई एम फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो, कैन आई डू समथिंग फॉर यू, कैन आई डू समथिंग फॉर यू. बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यार ये सब, बहुत इंपॉर्टेंट. सो एनीवेज, सो दिस वाज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग विच हैपेंड वाज, जिसको रीइंफोर्समेंट बोलते हैं ना, दिमाग में रीइंफोर्स हो गया एक आइडिया कि किस प्रकार से वन कैन एक्चुअली फील गुड in this kind of a tumultuous situation and in life. Another, again, wait,
थेरेपी सेंटर की बात है, थोड़े सालों बाद माई सन स्टार्टेड गोइंग टू अ वेरी गुड therapy center. It's a special school in Gurgaon, and that's where bunch of moms used to come to drop their kids. और हमारे बच्चे सब आगे पीछे टाइप एज के ही हैं, तो सबको बाय बाय बोलते थे, करते थे, बच्चे चले जाते थे, एंड देन देयर वाज अ सेंस ऑफ रिलीफ ऑन आवर फेसेस कि चले गए 5 घंटे के लिए आराम. सो एक दिन ऐसे ही हमने बोला कि ठंड थी बहुत, तो उन्होंने कहा बाहर एक बंडी थी चाय का, तो हमने बोला कि चाय पिए सब लोग चल के. मैं कहा चलो चलते हैं. फ्रॉम देयर इट स्टार्टेड, वहाँ जाके चाय पीना. देन द चाय ग्रेजुएटेड टू कॉफ़ी, देन द कॉफ़ी ग्रेजुएटेड टू अ नई मूवी रिलीज हो रही है, चलो चल के देखते हैं, 3 घंटा तो है ही हमारे पास. दैट ग्रेजुएटेड टू लंच. बंच ऑफ 4-5 मॉम्स गॉट टुगेदर एवरी मॉर्निंग, और हम इतने मोटिवेटेड. देयर वर डेज जब हम लोग कंघी तक नहीं करते थे, हम लोग एक फटा टी शर्ट और फटा पजामा पहन के आते थे भाग भाग के. नाउ वी आर सो मोटिवेटेड, हम सुबह उठ के बच्चे से पहले तैयार होके बैठे हैं, लिपस्टिक लगा के, क्योंकि आज बच्चे को स्कूल छोड़ के हम भागेंगे. आज हम लंच करेंगे, एक नया रेस्टोरेंट खुला है, सो नाइस, नई पिक्चर रिलीज हो रही है, हम पिक्चर देखने जाएंगे. आई स्टिल रिमेम्बर डियर जिंदगी रिलीज हुई थी. आवर गैंग इंक्रीज्ड. We were 20-25 moms walking inside the hall. First day, first show. बच्चों को 8 बजे स्कूल छोड़ दिया. First day, first show. डियर जिंदगी. सीटी बजा के, नाच के, गा के वापस आ गए. बच्चे को पिक करके घर चले गए. बट वो जो फीलिंग के साथ हम लोग घर वापस गए, that was good for us for the next 2 months to come. Yeah. True. That feeling में हमें आड़ दे, क्या करेगा तू, करते को जो करना है. I have a fall back. Very, very important. Suddenly हमारा वो जो pathetic situation था वो मजाक बन गया. We started laughing about it. जैसे ही मिलते थे we started laughing about it. That was the second thing that happened. बहुत पावर है यार इस चीज में, दोस्ती में. और अगर लाइक माइंडेड दोस्त हो, अगर वो दोस्त तुम्हें मिल जाए who are finishing your sentences, उससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता. That is community. That's what I did. The first thing that I did was social. गुड़गांव सोशल नाम रखा गया जी, सोशल. सारे माओ आओ बैठो, गप्पे मारनी है मारो, रोना है रो, हंसना है हंसो. जब बच्चे स्कूल गए हैं 3 घंटे का सोशल किया गया. सीनियर पेरेंट को इनवाइट किया गया, जिससे अगर कोई बात करना चाहे कुछ है, क्योंकि वो तो दिमाग में था ना, सीनियर पेरेंट वाला कनेक्शन तो था ही था मेरे दिमाग में, तो सीनियर पेरेंट को बुलाया गया. तो हर सोशल में एक सीनियर पेरेंट होता है मेरे. Okay. आओ बात करो, गप्पे मारते हैं यार, Because they have मस्ती gone करते हैं through यार. what you'll probably go in next 10 years or 5 years. अगेन जो तुमने अनुरिता जो चीज पॉइंट करी थी, द सिंप्लिसिटी ऑफ इट ऑल. Very important. और क्या लाइफ में, I mean every day ये is सिंपल important. था यार. Yeah, yeah. हमें पता है हमारे बच्चे स्कूल के अंदर हैं, 4 घंटे वो कहीं नहीं जाने वाले, कुछ नहीं होने वाला. घर में ब्रेकफास्ट सब कुछ रेडी वेडी करके हम आ चुके हैं, क्योंकि घर भी तो है ना, कर लिया. एक दिन हम भाग सकते हैं 2 घंटे के लिए, सब कुछ करके आ गए हम लोग, चलो लेट्स गो. बट वो जो रेजुविनेशन, वो जो रिचार्ज, रेजुविनेशन नहीं बोलूँगी मैं, इसको रिचार्ज बोलूँगी, वो जो रिचार्ज मिला वो सेकंड टू नन यार. It's like उसके पहले आप पूरा पहाड़ अपने अकेले सर पे उठा रहे हो, And then you start sharing it. then the third last nail in the coffin was this one mom committing suicide in Bangalore. What? This one mom, she was a reporter, and I think she was a single mother, if I remember correctly. She had a 14-year-old son. So she fed poison to the son, and then she jumped off from the balcony herself because she was not able to take it anymore. This is like a real. तो मुझे ना इतना अजीब लगा ये सुन के. मैंने कहा भाई, you were out there, you're a reporter, you're out there. तुमने क्यों नहीं एक्ट किया? You could have reached out to anybody. You could have spoken to anybody. But imagine her condition of her mind. I'm not going to judge her. I'm I just know. saying I that exactly it know what she's shake- gone through. I Yeah, exactly I know what That's she's what I'm gone saying. through. It shakes you. Why she was not able to, क्योंकि उसको वो सेफ स्पेस दिखा ही नहीं. नहीं दिखा, वही ना. उसको अपने दोस्तों में भी नहीं दिखा, उसको अपने ऑफिस के सर्कल में भी, जो उसका जो प्रोफेशनल सर्कल है वहाँ भी नहीं दिखा होगा सेफ ऑफिस में स्पेस. कल्चर ऐसा है ही नहीं कि आपको कोई सेफ शायद नहीं दिखा होगा. आई एम अज्यूमिंग हियर बिकॉज आई डोंट नो हर पर्सनली.
शायद उसको अपने दोस्तों में भी सेफ स्पेस नहीं दिखा Oh my होगा. God, it's- दैट वॉज द लास्ट नेल इन द कॉफिन. आई वेंट नम फॉर 3 days. मैं कहा ये कैसे हो सकता है यार. मैंने कहा कैसे कोई बात नहीं कर सकता. मैंने कहा बात तो सब लोग करते हैं यार, गप्पे सब लोग मारते हैं, Probably she didn't have anybody. कैसे to बात. talk. एग्जैक्टली. एंड दैट्स व्हेन माय हस्बैंड, देन मेरे हस्बैंड की बारी थी. ही गेव मी द नगेट, द फाइनल नगेट, But why कि didn't व्हाई डोंट यू डू समथिंग अबाउट इट. बस जी हो गया. रातों रात द स्पेशल मॉम वाज बोर्न एंड द वर्क स्टार्टेड. you? Wow. एंड द वर्क स्टार्टेड. You sent your friends this thing that. आई क्रिएटेड अ ग्रुप. हाँ, मुश्किल से फ्रेंड्स को बोला, वो हाँ. ऑफकोर्स आ गए. मेरी बहनों को जबरदस्ती पकड़ा मैंने हाँ, हाँ. कि भाई तुम आओ ग्रुप ज्वाइन करो, तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है, बट तब भी तुम्हारा Correct. नेफ्यू तो है, Correct. चलो चलो ज्वाइन करो ज्वाइन correct. करो ज्वाइन करो. जबरदस्ती लोगों को ज्वाइन कराया, अपने डैड को वैड को सबको ज्वाइन कराया मैंने. मैं कुछ तो शुरू करो, कुछ तो करो, कुछ तो करो. Special moms में dad. माई डैड, हाँ. वी हैव अ डैड ग्रुप. Please We have say a that. huge dad group where even I am not allowed. Oh. I'm not there. My Oh. husband is one of the admins there. Hmm. We have a वो भी प्रेशर से शुरू हुआ था भाई. पर वो स्पेशल बहुत जरूरी है. मैंने I वो think. बहुत बाद में हुआ था एक्चुअली. हाँ. स्पेशल डैड, हाँ. क्योंकि रियलाइज ये हुआ कि dads are the ones who are not sharing their emotions as effectively They as don't. moms are doing Yes, it. they don't. Special mom was into 2 years of existence, Hmm. and we did one talk on the Father's Day Hmm. where we've invited a lot of fathers. And 4 दिन, ये 4 weekend चला था ये. Very important fathers came, and they started talking about their journey, and that's when we realized कि भैया fathers don't share their emotions. They don't. जैसे it comes very easily for a woman to share her emotion. She opens up. Whenever she'll find somebody like-minded, she'll open up. Yeah. Dads का तो है ही नहीं कुछ, तो Or that's when, especially something which is a troublesome thing, emotional, they don't. so that's when special dad was born. That's so nice. So we have a special dad group which is Wow. going on, Yes. where no mom is allowed. So to all the special mothers and special fathers, now you have a platform, legit platform. You can go and be a part of it and share your journey, like, you know, because there are such nice people and simple people who are, like, you know, giving, and somewhere or the other we all are there to help each other. You know, it's so good. I mean, वही है, छोटी चीज है. Simple. एक कप कॉफी में आपने किसी के साथ कुछ नहीं किया, बैठ के आपने बोला यार आज ऐसे ऐसे हो क्या गया. किया हमने? बस हमने यही होता हमने है. चुगली करी. हम हमने वो भी अपनी जरूरी हमने है. अपनी probably there is somebody जिसने आके अपने इन-लॉज की बुराई कर दी, उसी में खुश. खुश हो ना, खुश हो ना. Correct. और क्या कौन किस चाहिए? चीज से गुजर रहा है, you never know. और क्या And- चाहिए yeah, यार? और क्या चाहिए. And when the special mom was created, so दिमाग में ये था कि मॉडल पेरेंट कौन होना चाहिए जिसके लिए तुमने ये काम किया है. हम्म. तो रियलाइज किया मॉडल पेरेंट मैं ही हूँ, हम्म. जिसके पास कोई समय नहीं है ज़िंदगी में. एक और बच्चा है, घर है, सास ससुर है. आई हैव अ हस्बैंड हु ट्रैवल्स अ लॉट, हम्म. तो प्रैक्टिकली ऑल द जर्नी इज घर में अकेले गुजरता है मेरा. तो मॉडल पेरेंट मैं ही हूँ जिसके पास समय नहीं है. Correct. कुछ पढ़ाई लिखाई कर लूँ इसके बारे में. देयर आर सो मेनी पेरेंट्स, आई मीन हैट्स ऑफ टू देम. They take so much pains, they sacrifice so much to learn about autism. You know, they educate themselves about autism. They becomes like autism Yeah, specialist. they do. Yes, I have also read. कितना कुछ करते हैं यार वो लोग. हैट्स ऑफ टू देम. मैं हूँ निकम्मी, सो मेरे लिए मॉडल पेरेंट मैं ही हूँ. नहीं, see, So the thing is- somebody, so there's a problem. So there's a typical, the way we work is that अच्छा ठीक है, ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम चल रहा है हमारी लाइफ में. ठीक है, ओके, मैंने सुन लिया. अब मुझे समझाओ मैं कैसे उसको हैंडल करूँ. अब इतने बड़े प्रॉब्लम को तुम अगर मुझे समझाना शुरू करोगे, कोई भी प्रोफेशनल आके समझाना शुरू करेगा, सब मेरे सर के ऊपर से निकलेगा. धड़ाम धड़ाम धड़ाम, कुछ यहाँ के हिट नहीं करेगा. सो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज, मैंने आई नेम देम द हैक्स. हाँ, मुझे छोटे छोटे कैप्सूल्स में दो हाँ. वो प्रॉब्लम, जिससे मैं उसको डाइजेस्ट कर पाऊँ. एंड नॉट ओनली डाइजेस्ट, मैं उसको इम्प्लीमेंट काम भी कर पाऊँ पाऊँ, उस पे, correct. इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर पाऊँ. एंड आज नहीं तो कर, देर सवेर रिजल्ट्स मुझे दिखना शुरू होंगे. सो एग्जैक्टली इसी प्रकार से हमने सब काम करना शुरू किया. See, what you're saying कि बहुत सारे पेरेंट्स बहुत एजुकेट करते हैं अपने आप Yeah. को, उसका एक अपना यूएसपी है, बेनिफिट है. आप जो कर रहे हो वो एक अलग ही चीज़ है, क्योंकि देखो कितनी भी नॉलेज, आई एम वेरी, एज यू सेड, हैट्स ऑफ टू देम, एंड any amount of knowledge is good and important, but if you cannot implement it in a day-to-day life, करेक्ट. if it's of no use, Correct. I think it will only
clutter your mind. करेक्ट. मुझे ऐसा लगता है. I mean, I नहीं, also बिल्कुल love ठीक, reading. बिल्कुल बिल्कुल पर ठीक अब लगता मैं है. ये क्या जान के करूँगी कि चांद पे क्या हो रहा है, धरती में इतने खड्डे हैं, वो देखूंगी ना मैं. I'm just saying, I'm not saying कि it's wrong or right. I am actually nobody to say that. But I feel that everyday thing, everyday problem solving attitude is way more beneficial according to me. Correct. I could be wrong. No. You're absolutely right. Absolutely right. Why wrong? You're But उनको भी absolutely पढ़ना right. बहुत लोगों को, जैसे I am also somebody who kind of, अगर कुछ हुआ किसी को, अगर किसी को कुछ हो गया, जैसे कि हेयर फॉल क्यों हो रहा है या हेयर ग्रे क्यों हो रहा है, तो आई वांट टू नो कि क्या होता है, क्या खत्म हो जाता है. आई एम आल्सो लाइक दैट. आई रीड अ लॉट, बट उसका होना जाना कुछ है नहीं. इवेंचुअली आई विल पॉप probably a vitamin C and that's done. So this is more important. So I want to know one thing, that did you send your child to a normal school? Did No. you try? No. Never tried. No. It never occurred. He did go to a play school. Hmm. He did go to a play school, and because the thought was that probably peer-to-peer interaction will help his condition. Because he was very little. He was what, 2.5, 3 years old. So that's what we thought. If you send him to a play school, the peer-to-peer interaction and all, many cases this really helps. But he started going there. He used to get disturbed, and the teachers started saying, that, you know what, I think we are not able to help him. So we had a very limited stint with a normal, so to say, a normal school. But usually parents are a bit scared, and the fear of मतलब अगर आप मतलब बच्चों को अगर एक स्कूल, न्यूरोटिपिकल स्कूल नहीं भेजो, तो बहुत सारे पेरेंट्स का मैंने देखा है कि वो ये सोचते हैं कि ये आगे कैसे पढ़ेगा, ये वो सब पढ़ाई कैसे करेगा, ये मतलब he'll miss out or she'll miss out on the education part of it. What do you have to say about that? So मैंने इसका नाम रखा है एक. I love it. इसका नाम है पेरेंटल एस्पिरेशन. हाँ, thank you. You're bang on नाम. So पेरेंटल एस्पिरेशंस को थोड़ा सा बैक सीट लेना पड़ेगा और रियलिज्म पे आना पड़ेगा आपको. बी रियलिस्टिक विथ योर गोल्स. क्यों पता है? क्योंकि वो दुख कम देगा. करेक्ट. पेरेंटल एस्पिरेशंस को ही अगर आपने गोल बना लिया ना, I'm loving it क्योंकि you have no frills. You say it as it is. ये लो, ये धाम, ये बक्सा यहाँ रख दो. Which is so cool. So पेरेंटल एस्पिरेशंस को बैक सीट लेना पड़ेगा, रियलिज्म में आना पड़ेगा आपको. एंड दिस इज फॉर ऑल द पेरेंट्स. अगर आपको दिख रहा है कि आपका बच्चा मैथ्स के साथ स्ट्रगल कर रहा है, तो उसको रखो बैक सीट पे. जस्ट बिकॉज आपको 90 मिले थे 100 में, इसका मतलब ये नहीं कि उसको भी मिलेगा. या उसके दोस्त को 95 मिल रहे हैं 100 में, इसको भी मिलेगा. नहीं हो सकता. उसको बैक सीट पे रखो. ये देखो कि आपका बच्चा अच्छा क्या कर रहा है, उसी को गोल बना के आगे बढ़ो. दुख कम मिलेगा, दर्द कम होगा, और प्राउड फील करोगे एट द एंड ऑफ इट व्हेन यू विल एक्चुअली सी हिम अचीव समथिंग. राइट. ऐसा नहीं है कि इसका मतलब ये नहीं कि मैथ्स पे काम करना बंद कर दोगे. करो, बिल्कुल करो, बट देन उसको लाइफ गोल मत बना लो. सो जो क्वेश्चन तुमने पूछा उसका यही है, रियलिज्म में रहो जरा. बी रियलिस्टिक. आई ऑल्सो हैव, मतलब मैं ये भी सोचती हूँ कि मतलब मैं जो देखती हूँ कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, इट पुट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द चिल्ड्रन, राइट. एंड उस पे से भी अगर देयर इज अ स्पेशल चाइल्ड हु इज एनीवे स्ट्रगलिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्रेसिंग, तो अभी आई डोंट नो कितना अवेयरनेस स्कूल्स में और कितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, बट डू यू थिंक कि है, नहीं है, या और होनी चाहिए? हर एक स्कूल में ऐसे थोड़े से प्रोविज़न होने चाहिए कि, क्योंकि क्या होता है इवेंचुअली बच्चों को भी बड़े होके they have to live in this world, right? So मुझे ऐसा लगता है कि there should be a little bit of window where these two should come together. I'm not saying कि forced, but they, मतलब जो न्यूरोटिपिकल बच्चे हैं और जो स्पेशल बच्चे हैं, उनको एक दूसरे के बारे में बचपन से अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर किसी भी एजुकेशनल सिस्टम में, किसी क्लास में अगर कोई स्पेशल बच्चा है जिसको कुछ समझने में जो भी एक इश्यूज होते हैं, तो उसकी अवेयरनेस अगर बचपन से बच्चों को दी जाए फ्रॉम अ वेरी यंग एज, डोंट यू थिंक दैट विल बी अ लॉट ऑफ हेल्प?
यस इट इज, जैसे तुमने बोला जो कि आई डोंट थिंक सो अभी है. बहुत बहुत कुछ होना शुरू हो चुका है ओके. जो 10 साल पहले नहीं था, करेक्ट. लेकिन अभी बहुत कुछ और होना है, बाकी है ना. होना है। बिल्कुल. और स्कूल्स में बोलो आप, मैंने हमेशा बिलीव किया है कि इट इज़ ऑलवेज बेटर टू स्पीक टू अ चाइल्ड और bunch of children about this prevalence of this condition, learning disability बोल लीजिए, ADHD बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, इन सब का प्रेवलेंस जो है हमारे आसपास बहुत दिख रहा है और आजकल बहुत ज़्यादा दिख रहा है, बिकॉज किड्स आर गेटिंग डायग्नोज लेफ्ट राइट एंड सेंटर, विच इज़ मेकिंग मी हैप्पी। बिकॉज अगर आप डायग्नोज नहीं होंगे तो आपको इंटरवेंशंस नहीं मिलेगी, आपको हेल्प नहीं मिलेगी, एंड आप उसी कंडीशन के साथ बड़े होगे, और बड़े होके और लोगों के नाक में दम करोगे आप आसपास, अपने तो करोगे ही करोगे, बाकियों के भी करोगे। सो it is good that things are rolling in that direction. People are getting diagnosed, kids are getting diagnosed, they're getting the kind of intervention that they need. But अभी बहुत कुछ होना है, बहुत कुछ होना है। The schools, the education system, especially the schools, that's where child begins his journey, right? Child are beginning their journey from that institute, which is called school. उस लेवल पे बहुत कुछ होना ज़रूरी है, बहुत कुछ। सिंपल अवेयरनेस, बच्चों से बात करके समझाना। अगर आज आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो पढ़ नहीं पा रहा है ठीक से, टीचर के 10 बारी 100 बारी समझाने के बावजूद भी नहीं समझ पा रहा है, तो उस पर मत हंसो। डोंट टर्न that person or that student out of the classroom. Don't send diary notes to the parents saying कि भाई आपका बच्चा नहीं कर पा रहा है। Try and understand. Come together with the parent, work as a team, understand that child and start helping that child. What if that child has dysgraphia? What if that child is dyslexic? Many things. Anything. It can be anything. Yeah. What if बहुत सिंपल सी चीज है, what if उसका आईसाइट ठीक नहीं है, वो बोर्ड पे देख नहीं पा रहा, तुम क्या लिख रहे हो, उसको खुद ही नहीं पता कि शायद उसका हियरिंग इशू है, वो शायद सुन नहीं पा रहा तुम क्या बोल रहे हो। ये सब सोचते हैं हम? नहीं सोचते हैं हम, ये सब नहीं सोचते हैं, फटाक से लेबल कर देते हैं बच्चे को, नालायक बच्चा है। और इज अ स्लो लर्नर, और इसको समझ लेबल नहीं करना आती। तो सबसे मजेदार चीज है यार। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सो स्कूल साइड पे देयर इज लॉट दैट नीड्स टू बी डन। वी पेरेंट एडवोकेट्स आर सिटिंग, वी आर एक्चुअली इनवाइटिंग पीपल कि भैया वी आर अराउंड, वी आर हियर टू हेल्प, tell us what we can do, how we can actually simplify this process for you. I was very happy, couple of months back I was invited to a very big school in Delhi, where I went and addressed the children. I think 9th 10th 11th के बच्चे थे शायद, if I'm not wrong. I went and I addressed them, and the questions that they asked at the end, it warmed my heart. Oh wow. मुझे वही questions चाहिए थे। And I think बच्चे थोड़े, but kids are very receptive and they're very open also. Open, they're empathetic. अभी तक दुनिया ने उनको ना बिगाड़ा नहीं है। Correct. Yes. Which is They're so true. empathetic. They are curious. The best is the curiosity. Yeah. They are so curious. And they haven't started judging. They are not. They are creating that walls. So we keep requesting it. I keep talking about it. If you go to my LinkedIn also and all, I keep writing it. I'm actually finishing all my posts by writing this, that we are around. Bunch of parents, we are here, we are around. We can come and we can actually, आप उसको ट्रेनिंग बोल लीजिए, आप उसको कॉन्वर्जेशन बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, we are ready to do it. We are here. And that's how this entire cycle can begin. I have a question, which is a lot of parents, when they are experiencing the aggressive phase of their children, they either lose hope, they themselves either get aggressive, or third, they start sedating the child because of medical intervention of people like, doctors suggest you that this is the right way. Right now, nothing is calming, so just sedate and sedate. I mean, I am not saying it's right or wrong, but what are your opinions on that? And it is a difficult phase, especially when a special child or autistic child is going into their adolescence, like when they're getting into their teens. For boys, it is a lot of hormones, testosterone. For girls, it is a lot of, the period starts happening. So
how should a parent deal with it? And I mean, what are the things? Probably, I'm sure you have gone through a lot. And how did you deal with it? And how do you, of course, apart from talking, at times it gets too much. Like traveling gets, you can't travel, you can't do anything. So, your thoughts on that or suggestions on that? So my only suggestion whenever this question pops up is work on your own self first. How do you mean? So the thing is that think about that parent who has an adolescent child. 14-15 साल का हो चुका है. The mother is going through perimenopause. Assuming? Kind of, yeah. Yes. Yeah. She's about to hit menopause. Perimenopause उसका life का शुरू हो चुका है. The father is in midlife crisis उस time पे. And I'm sorry to all the fathers, but that's the truth. And they are, it's safe to assume that they are somewhere in their lives where, in their professional lives, where the expectations have increased many folds out of them, out of their professional, whatever the position that they're working in. Even that pressure as well. So ये समझना बहुत ज़रूरी है what the parent is also going through at that point of time. एक parent जिसने 10 साल 12 साल देख लिया बच्चे का ऑटिज्म. यार मैं बोलती तो हूँ ना कि बच्चा बड़ा नहीं, बच्चा जो बड़ा होता है ना जिसको ऑटिज्म है, 2 लोग एक साथ बड़े हो रहे होते हैं, वो और उसका ऑटिज्म इकट्ठे बड़े हो रहे होते हैं वो. एंड हमारी लाइफ में, हमारी कम्युनिटी में सूरज नहीं उगता है सुबह, हमारे ऑटिज्म उगता है. बिकॉज वी रियली डोंट नो व्हाट मॉर्निंग इज गोइंग टू ब्रिंग टू अस. So it is very very important to start working on your own self first. Working on your own self का मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि छत पे बैठ के 15 मिनट ओम करो, नहीं, not that. Start training yourself. बड़े बड़े पेरेंट्स से बात करना शुरू करो, सीनियर पेरेंट्स से बात करना शुरू करो, किस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं उनसे पूछना शुरू करो, सीखना शुरू करो. बच्चा जो, देखो एक चीज़ याद रखो, ऑटिस्टिक बच्चा जो कर रहा है, ही कांट हेल्प इट. ही कांट हेल्प इट. उसको नहीं पता. एक लड़के की बात जो आपने करी, उसको बैठे बिठा इरेक्शंस हो रहे हैं, उसको समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है. यार मेरे साथ ये कभी हुआ ही नहीं आज तक. करेक्ट. वो क्या करेगा? मोस्ट ऑफ द जनता, ऑटिस्टिक जनता नॉन वर्बल है. अरे सोशल कम्युनिकेशन में ही तो इशू है, इसीलिए तो ऑटिज्म है. वो बता ही नहीं पा रहा तुमको यार क्या पंगे हो रहे हैं. तो अपने आप को एजुकेट करो. उसको अपनी बॉडी नहीं समझ पा रहा. देन लड़का है, बड़ा हो रहा है, एक और बहुत बड़ी नीड सामने आ रही है. हाउ विल यू टीच योर चाइल्ड टू मास्टरबेट? बट यू हैव, कैसे बात करोगे मास्टरबेशन के बारे में? सेम कम्स टू द गर्ल ऑल्सो. कैसे बताओगे उसको पीरियड्स होते हैं भैया, हर महीना यू गोइंग टू ब्लीड. एंड नॉट ओनली दैट, ब्लीडिंग से पहले 10 दिन तुम्हारी वाट लगी पड़ी होगी. PMS नाम की चीज़ होगी तुम्हारे साथ. पेट में दर्द होगा, खाना का मन नहीं करेगा, उल्टी आएगी, चक्कर आएंगे, नींद नहीं खुलेगी. So many things is going to happen to you. एक ऑटिस्टिक बच्चे को ये सब तुम कैसे समझाओगे? सो बिफोर लूजिंग योर कूल ऑन द चाइल्ड, अगर तुम्हारे घर में वो मारा पीटी कर रहा है, चीज़ें फीजें फोड़ रहा है, कुछ कर रहा है. आई ऑल्सो लर्न दैट, बाय द वे. मैंने भी अपने बच्चे पे हाथ उठाया है, और एक बार नहीं बहुत बार उठाया है. आई हैव इवन टेकन हिज हैंड एंड दरवाज़ा खोल के मैंने उसको धक्का मार के बाहर भेजा है कि भाई तू निकल यहाँ से, मेरे से नहीं हो पाएगा अब. ये सब नॉर्मल है, होता है, होता है. क्या यार, भगवान थोड़ी है, इंसान है हम यार. मतलब हद हो गई है. होता है, बट देन ये तरीके सही नहीं है, मैं ये बोलूँगी. इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा. सो सही तरीका अपनाइए. एजुकेट योर ओन सेल्फ, वर्क ऑन योर ओन सेल्फ. प्लीज स्टे इन टच विद सीनियर पेरेंट्स जिनके बच्चे 20-20, 25-25 साल के हो चुके हैं. अब उनके बच्चे रातों रात तो 20-25 नहीं हुए होंगे ना, वो भी उसी 10 से 16 साल की उम्र से निकले होंगे. और थिंक अबाउट देम, वो किस टाइम पे निकले थे. जब बिल्कुल अवेयरनेस नहीं थी, जिस टाइम पे दे वर नॉट वेर एबल टू ब्रीथ इन देयर ओन फैमिलीज ऑल्सो. द डॉक्टर्स हैव सेड कि मेंटली रिटार्डेड है आपके बच्चे, और उनको अजीब अजीब दवाइयाँ खिलाई गई थी इस नाम पे. ये वो पेरेंट्स हैं, उनसे बात करो. वो भगवान पेरेंट्स हैं, उनसे बात करो. एजुकेट योर सेल्फ. भैया बच्चा अगर टिपिकली ये कुछ काम करता है, हमें क्या करना चाहिए घर पे, हम कैसे हैंडल करें, मैं खुद को कैसे हैंडल करूं, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है. एंड सेकेंडली, वी हैव अमेजिंग प्रोफेशनल्स इन आवर कंट्री.
अब तो द वर्ल्ड हैज श्रंक यार, It has द definitely. वर्ल्ड हैज श्रंक नाउ पोस्ट कोविड. रीच आउट टू देम, speak to them. Mm. The professionals are so good, they're so nice, they're always open for conversations. बात करिए उनसे, पूछिए उनसे. बिहेवियर एनालिस्ट इतने सारे हैं हमारे कंट्री में अब. एंड मजे की बात यह है, देयर आर सो मेनी पेरेंट्स, देयर आर सो मेनी मॉम्स हु हैव बिकम बिहेवियर एनालिस्ट्स. Yeah. तो उससे बेटर कॉम्बिनेशन तो हो ही नहीं सकता. Correct. एंड ये सब फैसिलिटेशन कैसे होगा? हम है ना, आइए बिल्कुल है. बात करिए. बिल्कुल बात करिए. स्पेशल मॉम है आपके पास. Correct. Special mom आइए, है, बात special करिए. dad है. आप बात करिए. ड्रॉप ऑफ द हैट यू विल गेट सजेशन, ड्रॉप ऑफ द हैट देयर विल बी पीपल हु विल बी कॉलिंग यू. अगर आपके पड़ोस में कोई रहता है वो आपसे मिलने आ जाएगा. जैसे उसको पता चलेगा कि आप उसके नेबरहुड में रहते हैं, आपके पड़ोस में रहते हैं, या उनका घर आपके घर से 5-10 मिनट दूर है, वो खुद मिलने आ जाएंगे आपसे. या आपके बच्चे सेम स्कूल में जाते हैं, वो वहाँ मिलेंगे आपसे. तो इट इज़ ऑलवेज बेस्ट कि खुद पे काम शुरू करो. खुद पे काम शुरू करने का मतलब ये है, जानना शुरू करो, पहचानना शुरू करो. अब आपको पता है आपके पास एक लड़की है, 9 साल की हो चुकी है. थोड़ा थोड़ा बात करना शुरू करो लोगों से. शुरू करो लोगों से बात करना. उससे उसको भी बताना शुरू एग्जैक्टली. कि उसको भी, अब तुम उसको बताओगे कैसे, वो भी सीखो ना. सीखो ये कैसे सीखना बताओगे, पड़ेगा. करेक्ट. क्या करना है, घर में माहौल कैसा रखना है, आपने घर को कैसे करना है, एक सेफ स्पॉट बनाना है. आपका एक लड़का है जो बहुत अग्रेसिव है, जो बात बात पे मार कुटाने पे उतर आता है, तो ठीक है, दुख होगा. 2 साल के लिए घर मत सजाओ, रुक जाओ यार. दिस टू शैल पास. जब ये पास हो जाएगा फिर सजा लेना घर यार. 2 साल रुक जाओ यार, रुक जाओ. बात करते हैं लोगों से, जाके मिलते हैं लोगों से. सो ये है सजेशन मेरा, अगर आप पूछोगे मुझसे तो. बहुत जरूरी है, बिकॉज वो बात करने से, जैसे कि बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है कि हमारे बच्चे ही अग्रेसिव हैं. नहीं नहीं, सबके हैं भाई, है ना. बहुत लोग, मैं जानती हूँ ऐसे पेरेंट्स को जिनको लगता है कि यार ये इतना अग्रेसिव है, बाकी और ऐसा कोई अग्रेसिव नहीं है. बट आई सी नाउ, because I do not want to cite any examples here for any parent to feel good or any parent to feel bad about their own situations right now. But trust me, the stories that I've heard and the incidents that I have witnessed, they're far more worse than that you can think. So, matlab every time, like whatever I've heard and seen, every time there's a special child in a family, उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं कि हमारे बच्चे का फ्यूचर का क्या होगा, इसको कैसे हो गया, हमें ही क्यों हुआ. देयर आर सो मेनी फियर्स एंड क्वेश्चंस दैट अ पेरेंट गोज थ्रू. सो एंड यू हैव अ सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल मॉम्स एंड स्पेशल डैड्स. हाउ डू यू हेल्प them step by step, or what are the help and support that you're providing them? Please elaborate. So, firstly, it's not an organization. We are yet to get it registered or anything. I'm too lazy. I've not got it done yet. Secondly, the support structure, so to speak, is that we have taken care of, we've tried to take care of from the time the child is getting diagnosed till the time it is time for the parent to go from this world, because you're not going to be here forever, but your child will be. So what after us, to answer that fear, that what after us. So we have kind of tried to stitch all the ends, and we have tried to create this entire ecosystem where almost all your questions are getting answered. From the time your child is newly diagnosed to the next stage, to adolescence, to employability, if you're seeking employment or anything. And in between, if you have a child who's appearing for, say, most of our children appear through NIOS, the National Open School. They're doing their schooling from National Open School. So if you're doing National Open School, and if you're taking examinations from NIOS, even that as well, the education aspect as well. If you have kids who are creatively bent, somebody's into art, somebody's into music, somebody's singing, even that as well. And then of course you have employment. हम भारतीय लोग कहते हैं ना, बच्चा पैर पे खड़ा हो जाए. So पैर पे खड़ा होना बच्चे का, and of course to the end. So basically, if somebody comes to you as a parent seeking guidance,
So you guide them to Yes. the possible opportunities or the right doctors or the right professionals, Yes. so it's like a So channel. hence the WhatsApp community have 31 live groups, because we don't have 4 groups or 5 groups where all the discussions are happening at one time. So we have these 31 groups with 31 set of discussions are happening at one time. 31 different set of discussions we will, happening. we will share all the information Yes, on the please. yes, It's in the very description. useful. Yes. And the best part is that जैसे हमारे एज वाइज ग्रुप्स हैं, वी हैव अ ग्रुप विच इज़ न्यूली डायग्नोस्ड फैमिलीज के लिए जो अभी अभी डायग्नोज होके आए हैं, बिकॉज आप उनके साथ उस प्रकार से बात नहीं कर सकते अभी. यू हैव टू ट्रेड वेरी केयरफुली विद देम. And then you have a group which is only catering to the children if they are in the age bracket 2 to 5, because उस टाइम पे challenges different होते हैं. Then you have another group which is 6 to 10, जब से आपका बच्चा 6 से 10 साल का है. Then we have another group 11 से 15, adolescence, which is very which is adolescence. yeah. Adolescence के अंडर भी 2 हाँ. सब ग्रुप्स हैं. Oh. We have girl adolescence, we have boys Boy adolescence. ये 2 ग्रुप्स भी अलग हैं हमारे, because there's no point Yeah, keeping all these 2 parents together. correct. Because Very boys का अलग different, yes. challenges हैं, girls के अलग अलग, challenges हैं. correct. And then we have 16 years plus. बच्चा adult हो रहा है या adult हो चुका है. अब आप कुछ सोच रहे हैं उसके बारे में, कुछ skills दिखाना उसने शुरू किया है, उसने कुछ potential दिखाना शुरू किया है. How can you hone that potential? How can you help that child? Then we have a group which is only talking about employability. So we have, and on all these groups as we speak have subject matter experts in that group. That's very important. So that's great. Because the only purpose that we'd had in our mind, and especially I had in my mind, was मुझे conversation को haywire नहीं करना है. The conversation should have a structure to it. Correct. It should lead to some Yes, answers. yes. It should lead to favorable outcomes. Yes. It should. The Yeah, parent it should should feel be, yeah. happy after that conversation. Right guidance should be कि हम यहाँ अगर हमारा बच्चा बहुत अच्छा painting कर Parent रहा should है, be content Correct. after that conversation. Yeah. And parent should have that belief again in this support platform कि Correct. हाँ, this is it. This is what I was looking for. And the best part is it's online. Yes, Also it offline. is online. It If is it's- also yeah. offline. On Offline and कुछ off, है नहीं, everything is online. Yeah. I'm just saying So if there are groups who are that meeting has- regularly in a certain place. We travel to cities. Yeah, that's what I'm saying. I was in Bombay 2 years back. We did our Bombay social here, Oh, nice. and we've gone to Chandigarh. We've done a Chandigarh social there. We've done a Bangalore social. We have of course done a Gurgaon But what social. I'm We have done a saying- Noida social. So we keep doing these things. So yeah, I'm just that's great. But sometimes if you can't travel, but it's still online. But yeah, a lot Yeah. of serious discussions are happening online. Yeah, which is We have something called masterclass, where we invite very senior professionals in the field talking about very serious stuff. And again, the entire conversation is very heart to heart. So this what is Special Moms is the name of The Special the Mom. special. It is the name of the support platform. So, but it is on Facebook, right? It But- is on Facebook. It is on Instagram. And as you said, the 31 live conversations. It's a WhatsApp community. So how can someone join? Someone it? has to send us a request. We'll send the joining link Oh, for the that's great. community. Okay, For the community, yeah. that's fantastic. So now in you our know, in all the pages and in all the Facebook groups and everywhere, we have a WhatsApp number. Yeah. The Special Mom has a WhatsApp number. Great. So one can send a WhatsApp message on that number. Perfect. One can write an email to us as well. We have an email ID as well. So you have opened up all your doors for people to come in and through whichever way they want to connect. Absolutely, That's perfect. absolutely. That's perfect. And of course, the masterclass that I told you about. Mm. Not only that, we had a lot of serious conversations as well that keeps happening. We talk about a lot of stuff. These are all online sessions, because online session करना सबसे फायदेमंद चीज होती है. क्योंकि सब बहुत access सारे कर लोग सकते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, Correct. बहुत सारे लोग सुन सकते अपने हैं. घर से अपने जहाँ बैठे हैं जिस कंडीशन में उससे सुन सकते हैं। ऑफलाइन अगर करते हैं तो वो जोग्राफिकली बहुत वो हो मुश्किल जाता है. correct, हाँ, correct. बहुत कंट्रोल्ड मामला Correct, हो जाता correct. है. ऑनलाइन anybody can join. So our online sessions have parents from Germany, from Australia, from UK, from US, of course, joining Pakistan, Bangladesh. Wow. So, and by the way, let me take this opportunity to Please. introduce our Pakistan group as well. Oh, nice. So there's this one mom in Pakistan, in Karachi. She got to know about us during COVID times. She attended, she herself is a professional, she's a mom also.
She attended a lot of talks and a lot of conversations, and we connected on WhatsApp. And she was so much in love with the community. She started a special mom Shahir in Pakistan. Wow. Shahir is her son's name. Oh, The special mom is, of course, it's us. how sweet. So the group is called the Special Moms Shahir. Sahir. That group right now has close to 315 parents. A WhatsApp group. And बहुत serious वहाँ पे भी काम चल रहा है. I think as the writing, We have a group from Tibet as well. We have wow, a, you have expanded a like group, and all are these organic. I have not reached out to them. I have not. So it says I a have not. lot. So it says a lot. I have a about, Bangladesh group. No, that's what as I said earlier. It says a lot that people need it. You talk about national integration. I give you national integration. this I is give you what's international integration. Yeah, The special mom has dissolved borders. yeah, it definitely has. हम लोगों को ये नहीं दिखा तुम कौन हो. हम लोगों को दिखा तुम क्या हो. Yeah, correct. तुम एक माँ हो जिसको मदद चाहिए. बिल्कुल. और बहुत हमने किया है. बहुत प्यारी चीज की है आपने. So बहुत ही प्यारी हमें चीज. फर्क नहीं पड़ा. बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा हमें. हम लोगों को फर्क पड़ाएंगे. So nice. So I just have one it's a very personal, motherly, and humanly question. Have you made peace with what you have been given as a mother? Yes, I have now. I have it now. It was tough job. It was very tough. It was very dark. It was very dark. It was not fun. I'm sure it wasn't. That's why I asked this. Here I am. You're finding the way that I'm conversing, the way I'm talking, to be very candid, very honest. And this is the same person, probably 7-8 years back, who was contemplating suicide herself. From there to this. I can imagine. So I think human beings at large, मदर फादर नहीं पता, स्पेशल नीड्स नहीं पता, एक पर्पस लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है. बहुत ज़रूरी है. दैट कीप्स यू अलाइव. That keeps you alive. That keeps your heart beating. Very true. That keeps your cortisol in check. So yeah. now I have made peace with wherever I am. And I hope and pray that your peace reaches the heart of every mother and a father who are struggling. I so hope. Yeah, it will. See, you are doing your part, and you are doing it with like all your loyalty and love and passion. You know, it will reach. Whoever is needy will reach out. Like, how did I know you? I was just having a chat with Shilpi about a book that my grandfather wrote, and she wanted to translate it, and I'm telling about my film and blah blah blah. And then suddenly, this is like, I know exactly the person. I said, who? And then she spoke about you. I said, the universe is conspiring, So this is how it is. So I think we spoke pretty much a lot, and I'm so happy that I could be a part of your journey, and so are the people who are going to watch it. And I hope and pray that they open up if they are going through a difficult time, and open up and reach out to your special mom and special dads, and have more acceptance to their children, towards themselves, and yeah. More than accepting their children, they need to accept their own selves. That's what. Themselves also. And you've correctly pointed it out. I mean, there is one space that I can confidently say it's a non-judgmental, it's a safe space. Yeah. It's a bunch of us. Our doors are always open. Please, we're always there. We're always there. Yeah. Never ever think that you're alone. And always remember that we are stronger together. I mean, a lot of problem in today's day and age, even if it's not a special children's parent, is because people have started thinking that they're all alone. They have to go through all of it alone. It's not like that. There are a lot of people. You just have to reach out. Yeah, another thing that you have constantly pointed out about adolescence. Let me just quickly share it with everybody. We have started a program called Thrive in Teens. So where we are trying to take care of everything and anything under the sun when a child is entering adolescence. Oh.
So we have help for the parent, Mm-hmm. we have help for the community, Lovely. we have help for the child. So everything is available on our Facebook page and Facebook group. The information how you can reach out to us. It's called Thrive in Teens. Thrive in Teens. Yeah. Without Perfect. batting an eyelid, please Reach get in out. touch with us. We have She's- this amazing bunch of professionals who are sitting and they're ready to help you. Be it you, be it your own mental state, be it your immediate family who's driving you up the wall, be it your child, or anything at all, anything at all. The bunch of professionals are there. We have created this pool of professionals, which I'm very thankful, very, very thankful that they just agreed. They said, "तू बता कृति हम क्या करेंगे." करना है? Yeah, that gets me. Enthusiasm So- is very important. So we are there. We are there. So reach out She's to us. there. Reach out to them, please. Would yeah, I mean, it's all about like you have to reach out to each other. Yes, yes. So I'm very, very thankful. I'm very like it's my heart, all my whole heart to you. Thank you so much for being so honest and bindas. As they say in Bombay, she's so bindas. You spoke your mind. So thank you for being here, and I hope people definitely open up their hearts and reach out. Please, and thanks to you and to your entire team of people. You people are doing a lovely job, Yeah, just and keep at it. Please keep at Yes, it. yes. Keep bringing voices up. yeah. Be Keep the- nagging it's- people. इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता. That you all are in your own ways. Are you and all- saying that my nagging is likable? You are an actor. On that conflicted note of Kriti. Please keep giving voice to the silent. I will. Please. It's It's very, very important. very Very important. important. And Great. God bless your nagging. And Oh. that's why I'm here. oh, no. I think And, you know, I just before I like we and I feel that empathy is very important yes, in our society. Even if we don't understand what the other person is going through, just being understanding makes all the difference. being around. I mean, Yes. even if you are not a family or a friend, even if you're just a passerby on the road, and if you see a person who doesn't look neurotypical or normal in layman words, don't judge. It's fine. You never know why a person is fat. Maybe they have thyroid issues. Why a Correct. person is probably limping. Maybe they had something. Maybe anything. Just be a bit more empathetic. You know that they say, there's a saying, be kind. Yeah. You don't know what battle one is going through. Absolutely, and that is so true. The It's more very you important. mature in life, you see, we can keep on talking. So that's lovely talking to you, Kriti. Thank you Thank so you. much. And Thank you. super. That's a wrap. That's a wrap. Hi, if you connect with the talk and you want to be a part of the change to bring awareness for special children, do like, share, and subscribe to my channel. Thank you.